Hello everyone, good afternoon. I hope you all can hear me and see me. Currently another day, another battle. We will start the session in next 2 minutes. Today is the Nifty expiry. Hope you all are excited and I hope we book some good trades today. We capture some good momentum. I can see more people are joining in. What about buying M&M BTST? I can see questions are coming in. So, guys, we'll start the session with a Nifty outlook. If we have a trade right away, we'll focus on that. If not, we'll start with the support resistance, quick overview, current condition, and how to, manage the expiry, how to manage our risk appetite. Post that, we'll move towards the strikes on radar, see if we can have a trade during the session. And after that, we will, take up some stock queries and share the PTST. Hi everyone. Hi. Sure, ma'am, I've sent you a request to join the stage. Please accept that. Ma'am, can you hear me? Yes. Hi, I can hear you. Hi, good afternoon, ma'am. We are all set. We are just waiting for you, and then we are good. Yes. Good to be back after a long time. Yeah, please. Yes, ma'am. We can clearly see you. You are clearly audible. You can share your screen, and then we are good to go. Please continue in Hindi. Yes, Amit ji, we will definitely use both the languages. We'll try our best, and important numbers will be communicated in the form of numbers in the chat section, and you can check the pinned messages there. Your screen is visible, ma'am. Okay. Thank you so much. So we've seen that there pride in Nifty. Uh, and even though हम देख रहे हैं कि निफ्टी में सपोर्ट पे स्पाइंग इंटैक्ट है बट ओवरऑल अपसाइड में बहुत प्रेशर बना हुआ है एंड इंडेक्स इज नॉट बी एबल टू गो अबव इट्स साइकोलॉजिकल 23K मार्क्स तो 23,000 के ऊपर होल्ड करने का पूरा स्ट्रगल यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर हम आज एक्सपायरी डे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल देयर हैज बीन गुड बाइंग फ्रॉम 22,800 लेवल्स बट द इंडेक्स हैज नॉट बीन एबल टू कैच द मोमेंटम तो यहाँ पे क्लियरली मोमेंटम मिसिंग है कोई भी ट्रेड में अगर हम 15 मिनट्स के भी चार्ट को अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से कंसोलिडेट कर रहा है आफ्टर द ओपनिंग आवर में थोड़ी बहुत गेन्स थी बट उसके बाद से बिल्कुल फ्लैट रहा है विद वेरी लिमिटेड मूवमेंट सो इट्स बिकम वेरी डल एज ऑफ नाउ कल की सेशन में भी हमने देखा था कि एक इनिशियल डिप के बाद ग्रेजुअल अपमूव हुआ था बट लास्ट के 1 घंटे में काफी सेल ऑफ देखने को मिला था लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे वी हैव बीन कंसोलिडेटिंग and there has been lack of momentum but of course we'll try हम जो भी last के 1 घंटे के ट्रेड को try out कर सकते हैं so we'll track the strikes as well now India VIX is above 15 levels
at the same time index has been consolidating. तो इसका मतलब ये है कि इंडिया विक्स अगर 15 पे है यानी कि हायर जोन्स पे है और इंडेक्स एक रेंज में अटका हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि रेंज में काफी वाइल्ड स्विंग्स रहेंगे ऑन ईदर साइड. सो बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड वी आर गोइंग टू विटनेस वाइल्ड स्विंग्स क्योंकि इंडिया विक्स इतनी हायर जोन्स पे है. So support based buying is there, lack of follow up is there, consolidation में भी wild swings within the range देखने को मिल रहा है. This kind of a market is very tricky for option traders, especially buyers. ऐसे में of course हम strategy के through अगर play out करते हैं तो we can have some amount of consistent money, but then overall it's very difficult to trade in such kind of a market. Even yesterday's trading session was quite a lot the same. There were swings and there were, kind about range bound movement. But trend, एक unidirectional trend जो है वो market में clearly missing है. Which is why it's very difficult for option traders to catch call या फिर put. हम दो direction में से एक ही catch out कर सकते हैं. But this is how the markets have been from the last two trading sessions. Now, I'll just quickly talk about the levels for Nifty 22,725 is an important support. But अगर हम आज next 45 minutes की बात करें, तो 22,800 will act as a 22,850 will act as a major make or break zone here, and 22,923 जो कि इसका आज का हाई है, अगर हम उसको क्रॉस करते हैं तो एक अच्छी मोमेंटम हमें कॉल साइड में देखने को मिलेगी. बट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडेक्स गेनिंग मोमेंटम इज लुकिंग क्वाइट लो राइट नाउ बिकॉज हम देख रहे हैं कि 900 के ऊपर भी स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है. तो 22,900 के ऊपर अगर ये होल्ड कर रहा है और हम नेक्स्ट 10 मिनट्स में भी देखेंगे कि अगर होल्ड कर रहा है then we'll play out the call side, but if it's not holding then we will play out the put side. So we are tracking both call and put. I'll repeat the strikes. 22,850 call is what we are tracking and 22,950 put is what we are looking at. दोनों कॉल पुट हम इसलिए ट्रैक कर रहे हैं बिकॉज लास्ट के एक घंटे में हम देख रहे हैं कि ऐसे भी पूरे दिन मोमेंटम नहीं था, बट लास्ट 1 hour वी आर एक्सपेक्टिंग वाइल्ड स्विंग्स. तो ये दोनों को ट्रैक करते ही हम वो प्ले आउट कर सकेंगे. So 22,850 call and 22,950 put on radar. Index is holding above 22,900, but of course higher zones पे भी थोड़े बहुत call writers present है, which is making the index a little tricky at these levels. Now index has been अब ये 15 minutes की chart अगर हम देखें, so it is round about trying to make an attempt to cross its day's high level. In the meanwhile, I think we'll come back to Nifty, but उससे पहले हम Bank Nifty के भी levels को discuss कर लेते हैं. Ma'am, sorry to interrupt. Can you please just confirm the Nifty levels once, please? Yeah, so on the support level, we are looking at 22,725 as a positional support, but for the next 1 hour, we will look at 22,800. And upside, there will be buying only if it crosses the day's high, which is around about 22,923 levels. तो अगर ये इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है तो हम अपसाइड 22,950 तक के levels expect कर सकते हैं. We're not expecting much of an upside, so it'll be little capped. And strikes? So strikes, we are looking at 22,850 call and 22,950 put for that matter. Thank you, ma'am. Yeah. So now coming to Bank Nifty, I will just quickly discuss this because कल एक बहुत ही अच्छा short covering move देखने को मिला था Bank Nifty में, especially led by the smaller banking names. Now, the tricky part has been that this index was consolidating from the last 4 sessions, and हमने देखा था कि heavyweights कुछ भी perform नहीं कर रहे थे या support नहीं कर रहे थे.
बट जिस तरह से हम लोगों ने स्मॉलर बैंकिंग नेम्स में अब स्ट्रेंथ देखना शुरू किया है, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं इंडेक्स को. सो वी लुक आउट फॉर बैंक निफ्टी फॉर अ क्विक शॉर्ट अपस्विंग. हालांकि आज भी हम देख रहे हैं कि 49,500 को ये सरपास नहीं कर पाया है, तो वहां पे भी एक स्ट्रगल जोन बन रहा है. सो इफ इट manages to cross and hold above 49,500, तो वहां पे हम एक 50,250 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. But if it remains below these levels, then we might see 49,000 zones, which is a very close support, but that will be like a important level to watch out for Bank Nifty, right? Okay. So meanwhile, we are also continuously tracking 22,850 call. और यहाँ पे अगर momentum रहता है, तो of course we play out this one. Uh, but we have to be uh, अंडरस्टैंडिंग कि आज जो है इंडेक्स में मूवमेंट कम है, लैकलस्टर मूव हो रखा है, एंड वी डोंट वांट टू प्ले आउट जस्ट फॉर near 4 to 5 or 6 points. We want to play for a good upside. तो अगर 4-5 रुपए का मूवमेंट होता है, तो हम उसको नहीं चेज करने जाएंगे, because it's not a good risk reward. But of course, if there's a good momentum, then we'll try to capture that. Right. Okay. So, meanwhile, I'll also make you look at one stock which has been one of the favorite stocks of the week, you can say, Bajaj Finance. This stock is a good intraday or BTST play. इसको हम एक trade की तरह ले सकते हैं. Now, from the last 5-6 trading sessions, this stock has been in a range, but higher zones पे support को बहुत ही अच्छी तरह से respect कर रहा है और upward इसमें हम movement देख रहे हैं. So Bajaj Finance is one stock which is quite positive, and it's respecting its upward sloping channel as well. So this can be looked at. और अगर हम इसका weekly या monthly frame भी देखेंगे, तो भी काफी हमें positive यहाँ पे नजर आएगा. I'll just quickly make it weekly. You can see that it's continuously making higher bottom, which means support जो है वो higher zones की तरफ shift हो रहे हैं, and it's looking quite positive. So Bajaj Finance for 8,700 levels, 8,700 का targets यहाँ बनेगा. We can look at 8,250 as a stop loss for this one. So 8,250 के stop loss के साथ 8,700 के targets के लिए आप Bajaj Finance को दे सकते हो. Now Prashant has already posted these levels on the chat box, so those who've missed it can go back. Someone's writing screen not visible. I think काफी clearly visible है. आप refresh करके देख लो. Okay, so now someone's also written view on Bajaj Finserv. Now the reason why I'm taking this up is because I have discussed Bajaj Finance, and Bajaj Finserv and finance tend to have a very similar correlation. And ये दोनों stocks जो है काफी एक similar tandem में काम करते हैं. So this stock is also quite positive. But if you carefully look at the chart of Bajaj Finance and Finserv, finance is slightly more stable as compared to Finserv. इसीलिए हम उस chart structure के साथ जा रहे हैं. It's slightly less beta in the sense कि इसमें swings या volatility कम होगी Bajaj Finance में as compared to Bajaj Finserv. But of course, both of them have very good correlation. They move hand in hand. So one can look at both the stocks for a good momentum trade. And in these levels, of course, the risk reward is also quite favorable. Okay, so now coming back to Nifty में देख लेते हैं क्या हो रहा है. 22,910 के आसपास ही है जहां पे हम वापस इसको छोड़ के गए थे. तो it's hovering near those levels only. आज का जो day high है 923 का, if I'm not wrong, yes 923, वो क्रॉस नहीं किया है. अगर वो क्रॉस नहीं करता है तो हम यहाँ कॉल अटेम्प्ट नहीं करेंगे, because or else we'll get stuck in a very consolidative band. So we will wait for it to cross
22,923 marks for a call side movement. और अगर हमें call side movement लेना है, we will look at 22,850 call. Right now it's trading at 60. इसका support जो है 48 पे आ रहा है, and we could see an upside move. Right now the index is near 918. Let's just look at the 15 minutes frame again for Nifty. You can see days high के काफी पास है, तो अगर यहाँ पे ट्रेड हमें लेना है तो अभी बनेगा ट्रेड. So we'll just very closely track this and be ready if there is any trade at all. Index is getting set to touch its days high level. Some sort of lackluster move, क्योंकि बहुत धीरे movement आ रहा है और जितना आ नहीं रहा है उससे ज्यादा रुक जा रहा है index. So we'll have to be very patient while trading today because आज clear एक conviction नहीं मिल रहा on both the sides, either call or put. दोनों ही में अच्छे से नहीं दिख रहा conviction. So it's quite a tricky day, but of course option strategies के through जो play out कर रहे हैं वो काफी beneficial में है. Even though India VIX has cooled off a little today from the higher levels, but फिर भी काफी higher zones पे 15 के ऊपर है, जो कि एक indication है कि the bulls are not very much comfortable at these levels. So we'll have to be very careful. और ऐसे markets में क्या होता है, आपको बहुत ही strict stop loss के साथ ही काम करना है. When you are trading, it's important that you look at all these factors. आपको India VIX, Nifty, option data, and everything you'll have to closely track and look at. 22,850 call is what we are looking at right now. Okay, 22,919 इसका आज अभी पिछले 5 मिनट का हाई बन रहा है, तो भी वो डे हाई के आसपास है. So once we cross the day high, we'll have a very good momentum. Right. Okay, so index is all set for a great movement. 23. हम फिलहाल देख रहे हैं 22,923 का एक हाई बना है, but then again from those high it has sank down. तो ये जो इंडेक्स सिंक कर रहा है एग्जैक्टली अपने डे हाई के आसपास, वो एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे फॉलो अप बाइंग बिल्कुल नहीं है. So option traders, especially buyers, can get a little trapped here. So that is why it is advisable to do strategy buys only. 22,850 call in the last, I would say, 2 minutes have gone from 60 to 70 and then again back to 58 levels in the last few minutes itself. तो आप समझ सकते हो कि ये इतनी wild swings है. Right now it is at 56 right now. So I mean there are such wild swings at the moment in the market कि मैं जब तक आपको entry बोलूं, book profit बोलूं, तब तक वो वापस cost के नीचे आ चुका है. So you can imagine the kind of swiftness one needs in this kind of a market scenario. और 10 points से ज़्यादा movement मिल नहीं रहा है option, which is also very difficult to
capture if you are um, trading in such kind of a market. Again, the 22,850 call is near 5860 levels. तो इसमें मूवमेंट हमने जो देखा वो काफी इन अ फ्लैश ऑफ अ ब्लिंक ऑफ अ आई हम कह सकते हैं कि ब्लिंक ऑफ एन आई में हमने उसको 60 से 70 जाते हुए देखा एंड अगेन बैक टू 56 57 levels. So very volatile market, very difficult one indeed. Uh, Meanwhile, of course, stocks is what we are looking at. The smaller banking names are, witnessing a lot of attention. तो यहाँ पे कोई स्टॉक है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है. Now, pharma stocks have been one space which has really, not contributed at all in the last 1 week. बल्कि हमने देखा कि थोड़ी बहुत जो भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी वो आईटी स्पेस में था. So IT has been an important contributor in this entire week, right? So right now the call 22,850 call is below 55, 53 के आसपास आ चुका है ये. तो यहाँ पे हम मोमेंटम जो है वो नहीं है फिलहाल. Nifty did exactly touch its day's high, which is 22,923. हमने यही डिस्कस किया था कि 22,923 के ऊपर अगर ये क्रॉस करके होल्ड कर रहा है, क्रॉस करता है तो हम वहां पे कॉल साइड लेंगे. बट इट हैज एग्जैक्टली टच 22,923 और वहां से वापस हम देख रहे हैं कि 25 पॉइंट नीचे आ चुका है ये इंडेक्स. सो it has not been able to surpass its day's high level. So our trade did not get initiated today. काफी यहाँ पे हमने वाइल्ड स्विंग भी देख लिया पिछले 3-4 मिनट में. But yes, this is how the markets have been. 22,900 के आसपास आ गया है. Now, for tomorrow point of view also, if you look at the index, if it, manages to cross, if it manages to cross 23,000 levels, फिर हम यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम बुलिश साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. But or else we will see some sort of a consolidation और परेशान करने वाला market. But of course, in this kind of a market, one is advised to go for option strategies only. आप कई सारी strategies apply कर सकते हो. Of course, आज expiry के point of view से अब कोई risk reward बचा नहीं है. But for next week, which is going to be a monthly expiry, उसके लिए हम काफी कुछ plan out कर सकते हैं. Monthly expiry movements are very huge and we are expecting कि अच्छे moves आए. Next week we also have a holiday. So those who are doing option strategy, उस हिसाब से ही करें आप Monday, Tuesday, so that you can play out this. Right. So 22,900 के आसपास struggle कर रहा है Nifty index. So today was quite just a tracking day. हमारा call जो है वो initiate नहीं हुआ as per the rule that we were following. And right now the index has sunk again more than 30 points from exactly its day's high. So any other BTST? If we look at BTST, I think it's advisable to stay light. But एक stock है radar पे जो हम देख सकते हैं, which is the
So we can look at BSC. BSC is one stock which is looking positive और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 दिनों से प्राइस वॉल्यूम सर्च के साथ कंफर्मेशन हो रहा है बीएससी में. सो ये जो पिछले 7-8 दिनों का लॉसेस था वो 2 दिन में कवर हो गया है बीएससी में. एंड दिस स्टॉक इज लुकिंग क्वाइट पॉजिटिव. नाउ नेक्स्ट BSC we are expecting 6200 target. तो आप 6200 टारगेट्स के लिए आप इसको BSC को होल्ड कर सकते हो. एंड द स्टॉप लॉस वुड बी 5850 लेवल्स. सो 5850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 6200 के टारगेट्स के लिए हम BSC को रडार पे रख सकते हैं, ट्रैक पे रख सकते हैं. The previous hurdle zones has been 6150, but the kind of momentum that we are seeing from the last 2 days, ये एक indication है कि ये continue होते हुए दिख सकता है. So it can move on to 6200 levels. So watch and keep an eye on Bajaj Finance, BSC, some of the other stocks also. Like कुछ metal space में काफी अच्छे लग रहे हैं. JSW Steel has seen a very good momentum. और ये JSW Steel has been one stock from the last 30 trading sessions. We've seen that consistent performer रहा है. मार्केट में जो भी वीकनेस और वॉलिटिलिटी है उसके अलावा हम यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है. So this is one very stable counter. You can keep on radar and trade and in the intraday swing benefit. So BSC on BSC, JSW Steel, Bajaj Finance, all these stocks are very important. It's very important to see that which are the strength counters in this kind of a market. क्योंकि आपको फंसना नहीं है, कैपिटल इरोड होने से बचाना है, and we'll have to be very selective in the stock selection as well. So this is my take on such kind of a volatile market. And of course, अगर नहीं समझ में आ रहा है, so we can always go with option strategy. It's not important that buying side में आपको हर समय attempt करना है. You can look at strategies. Of course, monthly expiry है, थोड़ी बहुत volatility रहेगी, but strategies will be very safe to play out as compared to option buying. So guys, that will be all for today's session. I know हमने एक भी queries नहीं ली हैं, but taking एक दो queries at the end would not be justified for all the people who are trying to get their queries answered. So feel free to share them on Stockholm, and we'll be happy to answer them there. Thanks a lot, Shivangi ma'am, for ensuring that people save the capital. And I guess everybody liked it. काफी सारे लोगों ने mention भी किया है. Thanks ma'am for no trade. We have shared the BTST guys. You can check out the chat section. We have already pinned the BTSTs. So that will be all. We have a commodity expiry session at 6 p.m. today with Harsh Doshi sir. So don't forget to join in and see you at 6 p.m. Thank you everyone. Thank you Shivangi ma'am.